Gentlemen, on behalf of the KRITANJ committee, I am the Master of Ceremonies for the day, De Puja Dhar, and I extend a very warm and a hearty welcome to the distinguished guests of the day, KRITANJ 2022, the annual Techno Management Fest of Narula Institute of Technology. Firstly, I would like to thank you all for taking the time out from your busy schedules and marking this spectacular event with your glorious presence. It is indeed an honor to host such honorable guests we have with us today. Let me start with a little bit about KRITANJ. KRITANJ, the Techno Management Fest of Narula Institute of Technology, started its journey in the year 2013. Earlier, it was named Utkarsh. We stand at nearly a decade of this excellence. KRITANJ 2022 is a platform where talent meets opportunity. We are a step ahead in the goal of encompassing all technical domains and serve brilliance for the students, by the students, all over Kolkata. We aim to instill a desire for technical expertise, rational thinking, and logical. As per the protocol of the Institute, we start the event by the auspicious lamp lighting, and for that, I would request all the dignitaries to kindly come forward. Now, hello? 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 Hello?
Now, I would like to request all the dignitaries to kindly come upon the dais and take their seats. All the dignitaries, please come upon the dais and take your seats. Thank you. To start today's event, I would like to request our Honorable Principal Ma'am, Professor Dr. M.R. Kanjilal, to kindly address the guests with a welcome note. Ma'am, over to you. Very good morning. Hello. Very good morning, Mr. Debobroto Mitro, Joint Director, MSME Kolkata. Shitanam Mukhopadhyay, Assistant Director, MSME Kolkata. Mr. Profullo Billore, founder of COE, MBA CHAIWALA. Mr. Shayan Chakraborty, CEO. Where is the food? All the dignitaries on the dais and off the dais, my dear students, media persons, and any other who are present here. I welcome all of you in this auspicious occasions, which is the specially occasion for the students, that is the Techno Management Fest. This Techno Management Fest is totally built up by the students, benefit for the students, will be for the students, because in this Techno Management Fest, students will showcase their different technical skills, which few students today they will show this, and other students they will learn from this. And in the next phase, I believe more number of technical models and projects will be displayed. I welcome all of you, and especially I would like to thank the guests who came here, especially to Mr. Billore, who came from far distance to motivate the students. Actually, he is the live motivator in front of the students. Success in your hand. Through his story, you will learn this. Success in your life, that is in your hand. You have to learn, you have to build, you have to grow this. Thank you. I believe this program will get a grand success. And my dear students, you will learn much more technical field as well as in your own life skill. That is in your life, how you will move, how you will motivate your own life, how you will respect yourself. I believe everybody will enjoy. Thank you. Thank you so much, ma'am, for such an invigorating speech. Now, we would like to felicitate. It is indeed my honor to call upon the dais Mr. Debobroto Mitro, IEDS, Joint Director and Head of Office, MSME, DI, Government of India, Ministry of MSME, to kindly come upon the dais, and Principal Ma'am would felicitate. Next, I would like to request our Honorable Registrar Ma'am, Dr. Nidhi Singh, to kindly felicitate Mr. Praful Billore.
Now, I would like to request Professor Mohua Das ma'am to kindly felicitate Mr. Shayan Chakraborty. With this, we come to an end of the felicitation program. Next, I would like to request my co-master of ceremonies, Bishwarup Das Gupta, to kindly carry on with the event. Thank you. Thank you, Deep Pujadhar, for your heartwarming words. A very good morning, and I welcome one and all present over here for KRITANJ 2022. I am Bishwarup Das Gupta, final year student of BTech Mechanical Engineering Department of this prestigious institute, is going to be your host for now. Indeed, we can feel the energy rising as we head towards the official commencement of the event. KRITANJ is not only about technicality, but creativity as well. Each year, Narulites come up with mind-blowing ideas to create this technical excellence. To know more about this year's strategies, I would like to request Honorable Register Ma'am, Dr. Nidhi Singh, to kindly come up and give us some insights on the event. Over to you, Dr. Nidhi Singh. Thank you, Deepuja, and thank you, Bishwarup. You have already set the tune. So, Narulais, how's the Josh? How's the Josh? How's the Josh? So, hello, Narulites. A very, very, very good and technical morning to one and all present here. My heartful thanks and welcome to all the dignitaries on the dais, off the dais, team from press and media, my colleagues, my teammates, and my dear students. The inaugural session of KRITANJ will be witnessing today a live demonstration of a novel concept of waste management for dump yards, which is a matter of grave concern in our city, all of us know. Thus, today on this podium, I take this grand opportunity of announcing the theme of KRITANJ 2022 as Technology for Society. Over the years, cities and towns have managed their ever-expanding piles of trash in a variety of ways, including dumping it into landfills, burning it in incinerators, or shipping it off in trucks and barges. Such waste management systems contribute to air and water pollution and can be expensive and energy intensive. Today, our engineers around the world are focusing on the 5 R's of waste management, that is refuse, reduce, reuse, rot, and recycle, in an effort to deal with the solid waste not as trash but as a resource. I would like to quote the words of our Honorable Managing Director of the JIS Group, Mr. Taranjit Singh, who has mentioned in its regard that for taking up the unique initiative for a clean city and cleaner environment, we are absolutely proud of our young students from the Department of Electronics and Instrumentation Engineering, who are undoubtedly all set to create the world a better place for and habitable for many generations to come. Now, talking about KRITANJ, the history of organizing Tech Fest at NIT began in the year 2001, since the inception year, but that time the Technological Management Fest was known as Utkarsh. From the year 2013, we have rechanged the name to KRITANJ, and we have passed a decade celebrating KRITANJ in its own tone. KRITANJ 2022 aims at encouraging students to design waste management system for residential use and small businesses by looking at issues such as collection, separation, processing, recycling, health and safety, energy efficiency, environmental impact, and cost. Proudly, I state that this is for the first time in West Bengal that such a challenging project has been taken up by the budding technocrats of an institute to make the city cleaner. This year, the KRITANJ will also witness the participants of various technical aspirants from colleges all over West Bengal, which brings around a multitude of students to compete under one roof. Whether it is innovative idea, project display, technological symposium, robotics, coding, food fighting, zorbing, you name it a few.
It has witnessed more than 8,000 participants bagging more than 12 lakh prizes, participating in more than 60 events in the years. Also, this year we take the opportunity of organizing the 8th inter-college competition on technology for society, where participants shall showcase their innovative projects. Thus, I invite one and all present here today, especially the press and media, to propagate the theme technology for society to make it a new mantra for a brighter and better tomorrow. With this hope, I end my speech here, and I want to thank each and every helping hand who put in their efforts in making Kritanj a pompous success. We Narulais are a family together, and we celebrate all the events like a festival. Thank you to all, and I wish Fiesta will be a huge success, as we Narulais totally believe in making each day a successful one. Thank you, dignitaries, for giving your time. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for such an invigorating speech. With this, we have finally approached the much-awaited moment. I would like to request our Honorable Dean Sir, Research and Development, Dr. Shaurav Shah, to kindly address the gathering and declare the official opening of KRITANJ 2022. Good morning. It's a proud privilege for me to share this moment with all the dignitaries present here, and also with my dear students. You know, it's a great thing when learning happens with festive spirit and beyond the curricular boundary. And KRITANJ 2022 actually would give us that opportunity to make it fun. And I know that behind the scene, to make it happen, there have been a lot of efforts put by the students, by the faculty members. And I wish it all the success and officially declare KRITANJ 2022 open. Thank you all. Thank you, sir, for your heartwarming words. So, ladies and gentlemen, no event is complete without some awesome goodies. And thus we welcome you to the KRITANJ family with the official display of KRITANJ t-shirts. On this note, I would request all the honorable dignitaries to come up on the dais for the launch. And with this, we announce the official commencement of all the events of KRITANJ 2022. I would like to request honorable dignitaries to kindly uphold the t-shirts. Can we have a huge round of applause? That's amazing. And with that, we have officially displayed our KRITANJ t-shirts. Thank you so much. Hello. So, as I can see, I have quite a responsive crowd, but I think we can expect some more. So, let us start with a little bit of exercise. It's already noon, and I think a bit of exercise would help us. Yes? Okay. So, first, let us start by putting our left hand up. Very good. Such a responsive crowd. Now the right hand up. Now put them together. Clap. Thank you so much. Thank you. That was such a beautiful response. We would really expect that you would continue this exercise from time to time. Yes? Thank you. Now that we know what the exercise is, let us continue with the event. Wishing the absolute best to all the excited participants we have for today.
Let us continue with the event we have in hand. Now, I would like to request our chief guest for the day, Mr. Debobroto Mitro, IEDS Joint Director and Head of Office, MSME DI, Government of India, Ministry of MSME, to kindly address the audience. Sir, the dais is yours. Send the mic, you can't go away. This mic. Hello. Thank you. A very good morning to all of you. Director GS Group, Professor Dr. M.R. Kanjilal, Principal, Narula Institute of Technology, Dr. Nidhi Singh, Registrar, NIT, Dr. Bashwadi Dev Majumdar, Convener, KRITANJ Tech Fest, Mr. Praful Bilore, Mr. Sayan, my good old friend Sri Somnath Chakraborty, Assistant Professor NIT, and all other dignitaries in the dais, respected faculties, and my dear students from NIT. Today I am extremely privileged and happy to be here with you at this annual Tech Fest in this prestigious campus. Though physically I am not as fit as I used to be today, still I could not skip this event because basically it is due to the long friendship with Mr. Chakraborty, to whom I worked for a long time when I was in MSME DI Kolkata as Deputy Director and he was in BNCCI. So I could not take this opportunity as promised to him. Now, as I understand, this particular annual fest is long awaited and one of your cherished events, isn't it? Because you are a technologist, as a would-be engineer, and during the last 2 years, we have faced this most formidable challenge in our lifetime. But our indomitable spirit, the spirit of life, and the determination to win over the crisis has finally paid off. Now here comes the characteristics of an entrepreneur who struggles not only for his own enterprise or own existence, but also for the people he deals. His men at the enterprise, his customers, his suppliers, and you can name it, anyone related with the business chain. So this is actually the life spirit we expect from the entrepreneurs to survive. Now, you may ask me, why entrepreneurship as a career goal? So here comes the most coveted term, that is motivation. In our times, rather in earlier times, we didn't have this opportunity or infrastructure to learn this subject. Entrepreneurship is a subject. Those who came in the arena of setting their own enterprise at that time, that was due to their self-motivation. But today's situation has changed. Now we have structured courses, we have specialized people, and we have hand-holding assistance from right from your college to the government offices, institutes like us. So all these are with you now, and it is now become a real challenge for the new generations to come forward to take entrepreneurship as their career. Now coming to the MSME DI Kolkata, we are a subordinate office under the Ministry of MSME, Government of India, and our presence at Kolkata is the one of the main office we are in West Bengal.
Of course, we have some branches in Siuri, Durgapur, and Siliguri. We are offering entrepreneurship courses for a long time though. Our experience is that motivation is still a far cry out of the technical colleges and the universities. We are trying a lot to be in touch with the academic field, academic institutions and universities. We'll come to that. Before that, what we want to say is we advocate the ideas to come up so that we can incubate the idea and innovative ideas may be turned into a commercial viable project. That is our final aim. Coming to the MSMEs, you must be knowing that micro, small and medium enterprises, this is the new coined term in place of small scale industries, what we have been knowing since 2006 onwards. MSMED Act was passed and all the business now termed into MSMEs. MSMEs have a lot of contribution to the export as well as the employment. You can say this is the next to the agricultural field employment. Now, if we come to the definition of MSMEs, as of now, micro units having a turnover of 5 crore with an investment in plant and machinery of 1 crore. So, micro is not such micro. Similarly, small enterprises means a turnover of 50 crores and medium sector a turnover of 250 crores. So you can see that small is really not small. Over the years, Ministry of MSME, headed by the Development Commission and MSME at New Delhi, we have developed a network of institutions. We have MSME Development Institutes, we have branch MSME DIs, we have Enterprise Facilitation Cell, we have Export Facilitation Cell, we have Technology Centers, and Intellectual Property Facilitation Centers as well. Fortunately, in this month, we are celebrating Enterprise India from 27th April to 27th May. So your program comes in the same time as we are celebrating the Enterprise India program. Now, what we can do for you if you are really motivated to start up your own enterprise? I'll give some glimpses. We can assist you to select your project idea. That is one. Secondly, we can support you for getting all technical inputs what you need. Third, we can train you through our entrepreneurship and skill development programs. We have 1-day programs, we have 7 days programs, we have management development programs and skill development programs. So recently, we have also launched MSME Champion Scheme. This has 3 components, but one component you will be interested for, that is MSME Innovative component. Now, this takes care of your idea translated into a commercial project through incubation. We have identified various technical institutes as host institutes to nurture your idea, to examine your idea, and you can directly, we have a portal, you can directly apply to this portal, you can upload the idea and a designated host college, they will see through it. We have an expert team, they will see and examine your idea, and ultimately if the idea is seen as feasible, it can go through for the next phase of action with some financial support as well. Once you are in the business, we can give you Uddam registration, that is a must for registration, which is free of cost, of course, to get various benefits from the ministry. Now today, I have with me one of my senior and very experienced officer with me, Mr. S. Mukherjee is here. If you have any questions, any doubts or any questions, you can always contact him, interact with him, and I am sure that he will be your entrepreneurial, what can I say, friend, philosopher and guide in future. Now before I conclude, I must congratulate the young talents who have showcased their ideas
in this tech fest. Let's hope that your ideas will be more structured, will be more result oriented for your future success and fulfilling your dreams. I thank the management and the professors of NIT for giving me this chance to share my views with all of you. Thank you. Stay blessed. Thank you, Mr. Devobroto Methro, for your lovely speech. So, ladies and gentlemen, while preparing for this inauguration, I found myself Googling what IDEA really stands for. And for that, I have a very beautiful answer. IDEA is an impression in the mind. Mind is the most powerful tool gifted to mankind. And mind is what NIT likes to nurture towards excellence. Next, I would like to request Honorable Principal Madam of GKCEM, Greater Kolkata College of Engineering and Management, Professor Mohua Das, ma'am, kindly address the crowd on Ideometer. And for felicitating Professor Das, I would request the Honorable Convener of KRITANJ, Dr. Basuri Deb Majumdar, ma'am. Basuri, ma'am, please. A very good afternoon to all the dignitaries present here, my dear colleagues and my dear students. First of all, it's my proud privilege to be invited here as a speaker, and I'm thankful to the management as they selected me as the presenter for Ideometer awareness. This large crowd, this is the ideal platform to say something about the initiative of JIS Group, the Ideometer. I think all the students or all the person from Narula, they know what is Ideometer, but still we need some speech about Ideometer. We have two projects from Narula in Ideometer platform. The program was launched, the initiative was launched in the month of June 2020. The background was when there was lockdown. International Labour Organization, they have estimated that there is a loss of full-time job, 305 million. Our Honorable MD Sir, Mr. Tarunjit Singh, he has the idea and launched this platform. This platform is to encourage the creator within the JIS Group. This is the first initiative by any educational institute in Eastern India to indulge the idea or innovation of its own community. Now, who can submit idea in the Ideometer? Anyone from JIS Group. Maybe the staff, maybe faculty, maybe student, maybe alumni, anyone. And the member who are outside from the JIS Group, he or she can team up with any member of JIS Group and can submit their idea. There is no difference among anyone, whether be a student, whether be a principal, whether be a staff. There is no involvement of long time for funding. This is a crowdfunding platform which is very easy to submit the idea and to get the fund. This initiative helps us to indulge our IIC activity. We all know that IIC, Institution Innovation Council, is mandatory in every institute under AICT. And there is a concept that we build the repository for the idea, then prototype development, then startup. And for all this, we need the
angel fund, and ideometer will do that work. So if you have any idea, you submit it. Bring out the creator in you. We welcome your idea in ideometer. Get the fund. Make the startup from our community, from our own JIS group. So, thank you all. I welcome all the creators in this large crowd so that they submit idea and we get the project. We have projects in ideometer, but there is a few number. So, we welcome all the creators, all the idea from every institute of our group and get so many startups from our JS community. Thank you all. Thank you, the organizer. Thank you so much, Professor Das, for such a lovely speech. Moving ahead, food is a concept very close to my heart. To be very honest, I live so that I can eat. Anybody in the crowd who basically lives so that they can eat? Whoa, just a few people. Okay, still we exist. I'm happy. Now, I can only assume that a lot of us do, but they are kind of shy to attend that today. So when I heard that we would be the proud hosts of the famous Mr. Shayan Chakraborty, CEO of WTF, Where is the Food, I could only expect a dream come true moment. Getting something that's filling and doesn't compromise on quality is a miracle formula, and Mr. Chakraborty here seems to have just formulated that. With the lunch boxes only at ₹149 each, quality met quantity, accompanied by his generosity. The entrepreneur has now turned wordsmith with his autobiography, WTF Just Happened. That has been acknowledged by the legendary Ratan Tata sir. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the legendary Shayan Chakraborty sir. Sir, the stage is all yours. Hello NIT. First of all, এই নিচে বসার একটাই কারণ, after 2 years we are finally back to offline mode. জুমে আর ছোট ছোট করে দেখতে হচ্ছে না। এই আওয়াজটা যাতে কলকাতা অবধি পৌঁছায়, so that they know we are here at Kritanj creating history after 2 years. Can you just give a loudest round of applause for you guys? Whew. This feels like coming back to home after 2 years. 2019, I have been traveling all around India, delivering speeches, more than 75 schools and colleges, and then boom, 2020, we are back to home. Zoom meetings, same barite boshe kaj kormo, and now we are finally back. I just have one request for all of you. Just be this sound for the next 20 minutes. We have Praful right after us. Can we have a huge round of applause for him? This is the new India. This is the India that we dream of. For the next 2 hours of your life, if you think your life's gonna change, if you think you're gonna turn out to be an entrepreneur just outside the room, you're wrong. But what's gonna happen right after 2 hours, what happened to me 5 years back, I guess same thing would happen to you. I started to think differently. I started to think that if the people on the dais that day could do it, I can. The reason why I'm not up on the dais, the reason why I am at your level, and in fact, few of you are above me because we are just a family. I am one of you coming out from the crowd 5 years and today I'm here. And I look forward one of you would come back here in the next Kritanj and make history for yourselves again. So I am supposed to talk about motivation. After 2020, we are supposed to talk about motivation. So my book, WTF Just Happened, is this year's book fair's best-selling book, which is forwarded by Mr. Ratan Tata. He has personally called me up, written me a mail and said that I want to meet you because of the journey you had.
Before I talk about the journey, before I talk about motivation, let me tell you how this book happened. Not what the WTF just say. This is the mistake I tend to do every time. I just forgot we have teachers out here on the front seat. I just thought this is the interaction between us. So I would beg the pardon from teachers for the next 20 minutes. I just might them feel that they are back at their home. I beg your pardon for that. So can we just have the huge round of applause for the teachers, please, for them cooperation. So I'm sure after this cheer, ma'am won't mind if we say what the... So in 2020, we started 3 years back in 2015 when I was in college in St. Xavier's. Along with two of my friends, we started a small company at in the back of a history class because we thought that class was really boring. Sorry, ma'am. And we thought that we have to create something to get out of this because I couldn't stand with a CV after I was done with my college. So I thought with my two friends, chalo, আমরা ব্যবসা করি এবার কি ব্যবসা করব so we didn't know. So in case you don't understand ব্যবসা, this is business. So I have to always translate for my friend who's sitting here. So we didn't have any expertise. I am from a political science background, no commerce background. I didn't have any idea. I just had one thing, I have to create something that stays here long after I'm gone. That was the vision. I want to stay alive even after my death. So two of my friends, we started this company called WTF in a small kitchen of Jadavpur University or Jadavpur flat chilo. So we started this off with 2,500 rupees. I'll give you the breakup of 2,500 rupees. In my book, you'll find the pictures. In my outlet, you'll find that own sandwich machine. So 1,500 rupees was given behind a Bajaj sandwich maker. Jeta we got it from China, Chandni Chowk. And 500 rupees for a sandwich bread and 500 rupees for the meat and the chicken because we didn't know how to cook, and sandwich was the only food which could be made without cooking. You know, chop the vegetables, put the mayonnaise, and your food is ready. So we thought we're going to do sandwiches. And how do we get into the market? We named the company and we named the first prize again. Sorry, ma'am, 69. Those who didn't get the joke, get back home and start singing Pogo. So WTF at 69, Kolkata went mad. So when Kolkata went mad, we thought this was the right time. The metal was hot. It was the right time to punch it. We started giving the orders, and from 2 orders, it came 4, 4 to 5, 5 to 7. And one fine day when we were about to register the company, I will tell you how uncertain is entrepreneurship. Your friends would leave you. Your parents won't believe in you. The society would give you 1,000 reasons not to start. But if you have one solid reason to start, mark my words, take a screenshot of it, take a video recording, do whatever you want, you're gonna make it big, my friend. You're gonna make it big. Because there are 2 battles which you fight. One, outside. Second is inside. In my first TED talk, I said this. This is one of my very favorite lines. If you win the war which is you are fighting inside, you're trying to convince yourself that whether I'll do it, আমি কি পারবো? বন্ধু বান্ধব বলছে আমি পারবো না, মা বাবা বলছে আমি পাচ্ছি না, আমার দ্বারা কিছু হয় না. If you convince yourself, if you are not the one, it's no one else. The whatever is happening outside doesn't matter. It won't bother you whatever people are saying because you know you can. You are already successful. The time just has to happen and you have to just take the seat. So, in shop Jinish, and we started this company, and we registered the company. In 2017, we registered this company as a private limited company, and on the very day, we got our DIN and DSC number. That is the, jara jane na, taderke bole di DIN hoche director identification number. At a company form korte gele, private limited company form korte gele, there has to be directors in the company, jara founders hoy. 2 of my friends called me up that night, guys, back me up when I say this, not even kidding 1%. That very night, 2 of my co-founders resigned because they thought we are not gonna get above a sandwich maker. There was a point of time when my father used to ask me, what do you do? I used to, dhoro ekta 1000 taka profit hoyeche khawar beche. I used to, and it was just a 1,000 rupees note. I used to break it down into 10 100 rupee notes and send the picture to my baba and said, this is the amount of money I have so that it looks fat. So that was also a day because I had to prove it to him. His son was not that worthless. All this battle was happening, and then 2 of my co-founders left on the same day. The one who wanted to cook left for a job.
the other co-founder, যার সাথে আমি হিস্ট্রি ক্লাসের পেছনে বসে স্টার্ট করেছিলাম, he thought, higher studies is important. I don't blame them. I don't blame them because security is important. But what happened to me that night was magical. I felt alone. I felt cheated. I felt devastated. I wanted someone to come up on stage and talk these things to me that day, but no one did. No one did. I had to pull myself again and I decided I am not going to do anything. I am going to pursue my higher studies, get a job, get a life, 4:4 cubicle, and end my life just the way under the paycheck. Miracles happen. And in the third year of my college, I don't know how the result happened. See, আমার গলা এখনো শুকিয়ে আসে when I try to tell that. Can I just have a bottle of water, please? Because this is perhaps one of the most breaking moment. Even during my Josh talk, I broke down on stage while reciting this incidents, because this is perhaps one of the most emotional moments of my life. My teacher called me and said, Shayan, because of your result, you are selected to go for a scholarship 6 months program to United States of America. You'll do your final year from State University of New York, and you'll go there, you'll come back, and you'll get a dual degree. I was done. I thought that this is it. ফিরে এসে একটা চাকরি, 10টা 5টা, সিকিউরিটি, দ্যাটস ইট, এনাফ। যারা চাকরি করতে চায় তাদেরকে অল দ্য বেস্ট ফ্রম মাই সাইড। যারা করতে চায় না তারা কিন্তু ভুলেও ভাই কিউবিকেলে ঢুকবি না, ভুলেও না। গ্রাইন্ড, কিল ইয়োর সেলফ, বাট স্টে দেয়ার, stay there, stay there till the game is over. Stay there. I'll tell you how I stayed there. The coach, remember, we often get Facebook and WhatsApp forwards. Do not give up. Best things happen at the end of your comfort zone. Yeah, bhalo success time, this looks amazing. When you're having a big fat check and then you can come up on stage just the way I am saying right now. Do not give up. But for a person who has been devastated emotionally, financially, giving up is the easiest choice. And people often try to go with the easiest option. So what I did, I went to US and I started studying there. আমাদের এখানে একটা কথা আছে, খুব খুব বাবা মারা খুব বলে থাকবে, অনেকেই শুনবে, পড়াশোনা করছিস না, রাস্তার ধারে গিয়ে চা বেচ। আমি পড়াশোনা করে চাটা কেন বেচতে পারি না? We have a MBA CHAIWALA right in front of us. Keep it open. Yeah. For the first time, I came across a quotation, a word that perhaps changed my life. And এটা খুব ভালো করে শোনো এই ওয়ার্ডটা। The word is dignity of labor. Whatever you do, no matter whatever work you're doing, it has to give an equal respect as the CEO of the company. If you do that, India কে বড় হওয়া থেকেও আটকাতে পারবে না। টিল দেন আমার বাবা মা বলছে তুমি পড়াশোনা না করলে চা বেচবে গিয়ে, এরকম একটা ধ্যান ধারণা নিয়ে আমি নিউ ইয়র্ক শহরে পৌঁছালাম। আই ওয়েন্ট টু নিউ ইয়র্ক সিটি অ্যান্ড আই ওয়াজ ফ্লাবাগাস্টেড। মাই ফ্রেন্ডস টোল্ড মি দে ওয়ার্ক। কী করিস? বাসন মাজি, খাবার বানাই। দিস আর দ্য টপার্স যারা বলছে। আই সে ইউ আর আ টপার, ওয়াই আর ইউ ডুইং দিস? সো দে পে মি $15 an hour. আমার ইন্ডিয়ান মাথা ক্যালকুলেট করছি, $15 মানে 60 দিয়ে গুণ করে দেখি কত হয়। দিস ইজ তো হ্যাপেন্স। জল $1, বাবা 70 টাকার জল 3 বোতল খেয়ে নিতাম এই টাকায়। তো এইগুলো তো হয়। তো আই ওয়াজ ক্যালকুলেটিং যে হ্যাঁ আমি যদি, ফার্স্ট অফ অল সরি ম্যাম, ইয়েট অ্যাগেন, আই ওয়াজ ডেটিং সামওয়ান ব্যাক ইন US অ্যান্ড yeah, but not that exciting as it sounds. Pretty demanding. So এই ডিমান্ডটাকে ফুলফিল করতে গিয়ে I had to start working somewhere, and this was the easiest option because বাবাকে তো বলতে পারছি না প্রেম করছি টাকা দাও। So I started working and I thought that this is the only way out. So the first day I entered the kitchen, bhai, I knew what I wanted to do for the rest of my life. I saw the first time when the garlic was given in the oil, the green chilies falling down, the chicken flabbergasted, and the burger patty getting turned on. I was like, this is the place I want to spend the rest of my life in. And they said that Mrs. Judy Phillips, if I don't take the name, I would do injustice to her. She said, Shayan, we can't keep you because you are new. You don't know anything about cooking. You don't know anything about kitchen.
I said, I don't need $15. Give me 10, the bare minimum. She said, welcome to Mackin University's kitchen. That was the start. I started spending more time in the kitchen than in the classroom. I started seeing that আমার বার্গার বানাতে বেশি ইচ্ছা হচ্ছে নোটস লেখার থেকে. When I used to get huge amount of hand burns, আমার এখনো দাগ আছে, and I consider these as my awards because at some point of time, I'm still getting goosebumps, at some point of the world, where the world was sleeping, my parents were seeing that ছেলে তো পড়াশোনা করছে, I was creating something so small but significant, যেটা আজ থেকে 5 বছর পরে আমি জানতাম people would call it WTF. যেটা আমরা কিছু $1 million ব্যবসা করবো, আমরা তখন ওটা ভাবিনি. We are value at some $1 million right now. আমাকে আজকে we have to remove crowd from the restaurant by using Tollygunj police today. It gives me huge amount of pride to tell you we have allocated police to dislocate crowd on Saraswati Puja. There were close to 300 people standing. আমাকে ধাক্কা মেরে বার করে দিয়েছে. And এই ধাক্কাটা যেটা আমি খেয়েছি, I consider it as my biggest blessing. কারণ আরেকটা আমি বলছি, when I was signing my book, এটা KGF এর মতন হয়ে যাচ্ছে না, আসতে পেছনে বহুত আগে নিকাল গিয়া ওয়াপস আও, ওরকম হচ্ছে. আমার জামা ছিঁড়ে গেছিলো সাইন করতে গিয়ে book, and I kept that shirt framed because that is the love I got. So I started working in the kitchen, and ওই টাকাটা জমতে শুরু করলো. $10 an hour, 10 ঘন্টা কাজ করতাম দিনে, $100. ক্যালকুলেট করো না, 7,000 টাকা, অনেক টাকা. I knew that I didn't, and the girlfriend was gone. Girlfriend বেরিয়ে গেছে মাথা থেকে তখন. I was like, this is what I wanted to do. I was depending on someone to cook for me. I was depending on someone to keep my accounts. What if I do all of it together and make a new team? I'll share a very small incident. I used to, যখন খাওয়া সার্ভ করতো, I used to just stand for like 5 minutes এরকম ভাবে, and I used to imagine যে আমার এরকম একটা ছোট রোল সেন্টার হবে কোনো দিন ইন্ডিয়াতে ফিরে, ছোট্ট একটা যে বসতে because I knew the rates were pretty high. From there, in a year, we have built 4 restaurants with your money, your belief, Kolkata's belief. So I think magic still happens. So এই জিনিসটা করে আমি WTF খুললাম. Getting back to the book ever. All this was shut. All my sacrifices for the last 4 years was dumb. Finished. Shesh. Expenses were skyrocketing. China export বন্ধ করে দিল, এমবার্গো লাগিয়ে দিল, স্যালারি সবাইকে, we have to pay the salaries to everyone, the rents had to be paid, income was zero. For 1 month I didn't get out of my room. মা খাওয়ার দিত, খাওয়ার নিয়ে যেত. There is a video on social media, find me Shayan Chakraborty on Facebook also. There is a video. The video shows what was my reaction after I saw sun for the first time after 1 month. আমি রোদ দেখেছিলাম 1 মাস পরে, because I couldn't take the fact that everything that I had built over the years was turning into ash, zero, yet again. I'm সব ছেড়ে দিলাম, কলেজে একটা কিচ্ছু করিনি. I didn't go out for a party. After college I went to the meetings. Every day jeans পরা বন্ধ হয়ে যেত, পা কেটে কেটে শিয়ালদা থেকে একা মাল নিয়ে আসতাম. So I used to thought everything that I had put was turned into a zero. Is this what hard work is all about? Because COVID, we were not ready. COVID, no one was ready. People lost. I was losing my people. I was losing the team. I was losing the dream. And then I realized WTF is never gonna come back, because May, June, the peak was the highest. People were dying like anything. We didn't see EITA, we didn't imagine back in 2020. EITA, this is what we not imagined in 2020. No, people were dying every single day. So I thought, before my first baby, my company dies, let me write it for my son and daughter in the future. If they ask me, Baba, tumi ki korte college? How was your college life? How was the time when I'm 25? How was your youth was like? I would just hand him or her the manuscript and say, don't tell it to anyone. This is how I sold a dream to the city at just ₹149. Our dream was sold to a city at just ₹149, and Kolkata granted me with open arms. And there is a part in the book which is written, if this ever comes out as a book, and if any of you who's reading the book starts something and one person is employed from there, my job as an entrepreneur is done. I am done. Same goes here. এই motivation কিচ্ছু না, এগুলো আসবে যাবে. Yes, আসবে যাবে. If any of you from here start something, that is my victory. So before I conclude the speech, I'm going to do something. Please একটু cooperate করো. ভালো লাগলো তো?
I can't hear you. I can't hear you. I can't hear you. ভালো লাগলো তো? So just a small request to each one of you. This is the exercise that I had done back in St. Xavier's. Do you all have your phones, right? Take out your phones. Take out your phones. And switch on the flashlight. This is a promise to yourself. Oh, this is looking so beautiful. Just this is what we lived for back into the. This is what we miss, guys. Please, I am requesting everyone. Please, এইটুকু আমাকে help করে দাও. This is a promise to yourself, and this is a gratitude to everyone, a homage to everyone we lost in COVID, to the workers, to the doctors, to the policemen, to the people who has given everything so that we can stand here. Thank you so much, guys. And can I just click a photo with you people, if you don't mind? Keep this thing high up. Ready? In 3, 2, 1. Thank you so much, guys. You have been an amazing audience, and I look forward to hear Praful. And I hope in the next 2 hours or 1 hour, you enjoy this session and you turn out to be a better person. Thank you so much. This is Shayan Chakraborty signing out. So thank you, Shayan Chakraborty, for your motivating words. We indeed need this motivation after 2 years of complete lockdown. That was indeed a mind-boggling address. Thank you so much for addressing the gathering with such wonderful ideas. And now I would like to request Dr. Basuri Dev Majumdar, convener of KRITANJ Tech Fest, to kindly come up on the dais and address the gather with a final vote of thanks. What an historic moment today, the KRITANJ 2022. I am here to give the vote of thanks. On the behalf of organizing team of KRITANJ 2022, I would like to extend my vote of thanks to our management, MD sir and Simmerpreet sir, for extending the support to organize this event. Secondly, I would like to thank our principal madam, Dr. Moitri Ray Kanjilal, to extend her support time to time valuable suggestions for the event. Thirdly, I would like to thank all the invitee guests to this event, KRITANJ, Mr. Praful, Mr. Shayan, and Director of Msme, and also Raj Vikramaditya. Tomorrow he will be joining Striver for the event. Then I would like to thank our technical collaborations with IEEE Cash, Institution of Engineers, our sponsors for the event KRITANJ 2022. I would also like to thank our Dean Sir, HODs of the department for extremely giving the valuable suggestions to us. I would like to thank our organizing team of KRITANJ 2022, faculty members, staffs, the students who have given tirelessly effort to organize this event. Thank you to the students. And finally, I would like to thank the Almighty God that we had a wonderful weather today for the event KRITANJ 2022. So thank you all, and we are ready for the main event of the KRITANJ 2022 and hope you all enjoy this event. Thank you all. Thank you so much, ma'am. That was indeed a wonderful speech. Moving ahead, can I get a shout out? Chai! Anybody? Chai! Come on, let's get a shout out. Chai! Now, I think we have a lot of tea enthusiasts here. Anybody? Okay, it's like the entire hall right now. I like it. Yes, today we have a very special guest with us. At just the age of 25, he has an income in crores. Want to know how? Want to know how? Hear it from the man himself. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the renowned Praful Billor sir. Thank you. Hello. Thank you. सयन इतनी एनर्जी देके गया कि आपकी एक्सपेक्टेशन मुझसे बढ़ गई होगी.
आप लोगों को सब हिंदी समझ आती है ना? मेरे को बंगाली में सिर्फ कुछ भी नहीं आता है क्योंकि बड़ा मुश्किल है। पर सयान की टी शर्ट पे कोट बहुत अच्छा लिखा था। सयान क्या था वो? बंगाल विल डू बिजनेस, एम आई राइट? सो बंगाल करेगा तो भारत भी करेगा, भारत करेगा तो बंगाल कैसे पीछे रह सकता है? ये आप लोगों ने गेट क्यों बंद कर रखा है ये बताओ सबसे पहले। आने दो ना उन लोगों को। हाँ आने दीजिए, क्या दिक्कत है? सुनने दीजिए, पीछे बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। मैं सबसे पहले आके निधि मैम से यही पूछा, अब सबका है यार, ये हम सब आपके ही तो है, कोई वीआईपी थोड़ी है? क्या बोलते हो? जितने सुनेंगे उतनों का भला। क्या गंगा है बह रही, जितने तो पाप धुल जाए। अच्छा नहीं तो जय राम जी की। आने दो सबको भाई, आओ बैठो, खड़े हो यार। अच्छा मुझे कितने मिनट से, मुझे बता दीजिए आप कितने मिनट से? ऐसा कुछ है? 10, 15, 20 मिनट, 22 मिनट? कोई टाइम लिमिट तो नहीं है ना? हाँ क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे दे दिए कॉलेज वालों ने, मैं जाऊं? ठीक है, जैसा आपको लगे। हम आपके क्षेत्र में, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। टी शर्ट पहना दीजिए। ये टी शर्ट पहनूं मैं? है? हाँ हाँ पहन लेते, 2 मिनट लगेगा, पीछे पहन लेते। कहाँ पहनना है? हाँ हाँ ठीक है। कैसे भाई साहब? वो मेरा लिवाइस का 2000 का टी शर्ट है, वापस देना मेरे को, नहीं तो इधर सब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कुछ बचेगा नहीं। ये जिसको बाहर जाना जाने दो, जिसको अंदर आना आने दो, फिर अपन कार्यक्रम को चालू करते। समझ रहे हो आप? आप लोगों के सबके पास फोन हाथों में है, बाप रे बाप इतना सारा प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद। NIT नरोला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रेजेंट्स कृतांज, नाम बड़ा सुंदर है, लोग भी बहुत अच्छे आए यहाँ पे, सब एनर्जेटिक है। सयन ने बहुत ज़्यादा एनर्जी भर दी है। ये मेरे को एक्सेल आता है, इन्होंने M पिना दिया है। अब मेरी जॉकी की चड्डी दिखेगी तो बुरा मत मानना। ऑल वेल? अच्छा बहुत भीड़ हो गई, मुझे लगता है कार्यक्रम बिगड़ ना जाए। आप थोड़ा इधर आ जाइए भाई साहब, आप थोड़ा इधर कोने में आ जाइए तो सबको जगह मिल जाएगी। सब अपने भाई बहन है, नहीं सबको जगह मिलनी चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट, थोड़ा इधर खिसक जाओ। थोड़ा आराम से इधर आ जाओ भाई। भाई आप थोड़ा सा इधर आ जाइए भाई साहब। पूरा मुझे लग रहा है कि भैया मेरे ऊपर है ना भांडा फूटेगा इसका, कि प्रफुल्ल भैया ने कार्यक्रम बिगाड़ दिया है। भैया मेरा सपोर्ट देना यार। कंट्रोल। अब भाई यार ये थोड़ा डिसिप्लिन से आ जाओ, बाकी लोग जितना आ गए इनफ है आई गेस। यहीं पे हम थोड़ा रोक देते हैं, मैं राइट? यही बोलना है मुझे? यस यस प्लीज मैम, इट्स स्टेज इज योर्स। गाइस सब लोग पीछे चले जाओ प्लीज, एट द एंड वेरी फास्ट प्लीज। अनिकेत एंड टीम काइंडली टेक केयर ऑफ दिस, सबको पीछे लेके जाओ। There are seats at the front, please fill them up fast. This side, the students kindly come this side as fast as you can. The students standing here. आ जाओ फटाफट से आ जाओ। Please take your seats. अब मेरे को पैसे देने पड़ेंगे आप सबको, एंट्री दिलाई है मैंने। Students at my left, students at my left, kindly. Please make this process a bit faster, please. ठीक है Guys, please move the queue a bit faster, please. अरे इधर हो जाओ भाई, थोड़ा सा इधर हो जाओ यार।
एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे पहला डिसिप्लिन होता है डिसिप्लिन, मतलब पहला रूल होता है डिसिप्लिन। पहले एंटरप्रेन्योरशिप का पहला डिसिप्लिन डिसिप्लिन होता है। वाह भाई। Guys at my left, a bit faster please. Come to the front or... Okay, now just as we are going to start the event, all are requested to kindly maintain silence. Please maintain silence. अब ये तीन लोग उधर क्या कर रहे कुर्सियों पे? इनको भी बुला लो। चलो कोई बात नहीं, चलो हेलो गाइस, आप सब लोग रेडी हैं? अब थोड़ी शांति आती बना लो भाई। अब जितने आ गए अंदर ठीक है, हाउसफुल तो हो गया, पिक्चर तो देखने को मिल ही जाएगी, एंट्री मिल गई उसके बाद। मैं राइट और रॉन्ग? सो मेरा नाम प्रफुल्ल बिल्लौरे है। इस प्रफुल्ल का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस, प्रफुल्लित मन। मेरे परिवार में हम 4 लोग हैं। तो मेरे पिताजी ने एक छोटी सी कहानी लिखी है हमारी, छोटी सी, कि सोहन संग शोभा बढ़ाते हुए, शोभा मेरी माँ का नाम है, सोहन मेरे पिताजी का नाम, सोहन संग शोभा बढ़ाते हुए प्रफुल्लित मन से विवेक से काम लो। समझ आया? प्रफुल्लित मन मतलब खुशी के साथ, विवेक मतलब बुद्धि, मेरा छोटा भाई। तो ये मेरा छोटा सा परिवार है। और मैं समझता हूँ कि 21वीं सदी भारत की सदी अगर है, तो हम अतीत की नींव पर अगर भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमारी संस्कृति, हमारा परिवार, हमारा धर्म और आपका परिवार, उसको साथ में लेकर आप सफल होंगे तो वो सफलता ज़्यादा मीठी होगी। समझ रहे आप? जो सफलता आप परिवार के साथ, समाज के साथ, अपने कर्मों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ बनाएंगे, वो सफलता बड़ी मीठी होगी। अकेले टॉप पे पहुंच भी गए ना तो मज़ा नहीं आएगा। और अब खेल बहुत पलट गया है। तो मैं जन्मा हूँ मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला है धार, इंदौर से करीबन 60-70 किलोमीटर दूर है। वहीं मैं अपना जन्मा, वहीं पला बड़ा, मध्यम वर्गीय परिवार से हम आते हैं। आपकी तरह, सयन भाई की तरह, आप जैसे लोगों की तरह, बच्चों की तरह मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का सपना था कि कुछ करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाया, ठीक है, हम यूज़ करके खुश हो रहे हैं, एम आई राइट? ये घड़ी बनाई भैया 60-70 हज़ार की, हम यूज़ कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, फ्लॉन्ट कर रहे हैं, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास घड़ी है। बनाया किसी और ने, हम यूज़ करके खुश हो रहे हैं। ये माइक किसी भैया ने बनाया होगा, एम आई राइट? हम यूज़ कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। कैमरा किसी ने बनाया होगा, हम हवाबाजी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पर रील डाल के। हमने क्या बनाया कि दुनिया खुश हो रही है? हमने क्या बनाया कि दुनिया खुश हो रही है? कब तक दुनिया के बनाए प्रोडक्ट को यूज करके अपनी समृद्धि, सफलता और खुशी का परिचय दोगे? कब तक ग्राहक बन के काम करोगे? कब तक ग्राहक बनकर जीवन को, जिंदगी जियोगे? इंडिया इज अ लैंड ऑफ कस्टमर्स, एम आई राइट? चाइना, अमेरिका, यूरोप, जापान सब देखता है कि कुछ भी चालू करो भारत में सब बिक जाएगा, क्योंकि जनता इतनी है, लोग ही लोग हैं, जहां देखो 2 ही लोग दिखते हैं, सब खरीदार हैं, एम आई राइट? पर कभी हिंदुस्तान को इस नज़र से पहले नहीं देखा गया था कि यहाँ तो टैलेंट भी है, टेक्नोलॉजी भी है, इंजीनियर्स भी है, साइंस है, एंटरप्रेन्योर्स है, यूनिकॉर्न्स है। आप में से कितने लोगों को पता है यूनिकॉर्न्स क्या होता है? यूनिकॉर्न क्या होता है किसी को पता है? स्टार्टअप की भाषा में सिर्फ 5-7 हाथ दिख रहे हैं मुझे। आप एंटरप्रेन्योरशिप से काफ़ी दूर है अभी। यूनिकॉर्न पता है क्या होता है? $1 बिलियन का वैल्यूएशन, 7,500 करोड़ की कोई कंपनी की अगर वैल्यू हो गई, मतलब वो यूनिकॉर्न बन गया। कितना? 7,500 करोड़। और बहुत खुशी हो रही है मेरे को आपके बीच में बोल के कि कल और परसों में ही हमारे देश ने 100वां यूनिकॉर्न दिया है। 100 शतक लगा दिए देश ने। 2011 में रजन भाई की कंपनी में अभी पहली बार यूनिकॉर्न बनी थी 2011 में। सिर्फ 2021 ने 45 यूनिकॉर्न दिए। कैन यू इमेजिन? 45 यूनिकॉर्न इन जस्ट 2021। और अभी में 18-19 तो इसी साल हो गए। आप समझ रहे हैं ये देश की गति कहाँ जा रही है, इस देश की दिशा कहाँ जा रही है। देश 2021 में जो सदी है ना, अब मेरे तो बायो में भी लिखा है, इंस्टाग्राम में आपने देखा होगा, 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है। 21वीं सदी आप और हमारी सदी है। बहुत हो गया लोगों के प्रोडक्ट यूज करके, लोगों की शादियों में नाच गाना करके, सयन की स्टोरी सुन के, प्रफुल्ल की स्टोरी सुन के अपनी कहानी कब बनाओगे? हैं? क्या होगा? MBA चावला आया, उसको तो इनवॉइस मिल गया, उसका फ्लाइट का खर्चा भी स्कूल कॉलेज वालों ने उठा लिया, होटल भी कर दी। मैं तो इंप्रेस, आप मेरे साथ सेल्फी भी ले लोगे, फिर तो मैं तो चले जाऊंगा, फिर तुम क्या करोगे? हैं? लोगों से इंप्रेस होना और लोगों से डिप्रेस होना
बंद करो। एम आई राइट? हम लोग एक जादू की छड़ी ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? कि साइंस से मिल लेंगे, एनर्जी आएगी, मजा आ जाएगा। पर मजे से धंधा नहीं होता है, मजे से घर नहीं चलता है। मजे से तुम्हारे मम्मी पापा ने जो मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके इन कॉलेज वालों को दिया होगा, उसका रिटर्न नहीं निकलेगा। मैं सीधी सीधी बातें नहीं करता, मैं बेटरिंग बातें थोड़ा समझ आए मैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको मजे दिलाने, मैं कोई कॉमेडियन नहीं हूँ, जाकिर खान नहीं हूँ मैं आपको हंसाने, पर हाँ हंसा दूंगा क्योंकि आप हंसोगे। क्योंकि जब मैं सत्य को स्वीकार करने को आपको बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा। एम आई राइट? बुरा लगे भला लगे, पर वही जैसा बोला ना कि 1% या एक एंटरप्रेन्योर भी यहाँ से निकलता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये देश बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। इस देश में पिछले 5 सालों में लगभग 70 से 75 करोड़ इंटरनेट यूजर आए। कैन यू इमेजिन? 75 करोड़ इंटरनेट यूजर इन लास्ट 6-7 ईयर्स, 8 ईयर्स ओनली। इसके पहले कभी ऐसा नहीं था। आज न्यूयॉर्क में कोई चीज अगर लॉन्च हो रही है ना, तो हो सकता है दुर्गापुर में भी उसी दिन हो जाए। एम आई राइट? कोई उड़ीसा के कोई गांव में कोई चीज लॉन्च हो रही हो सकती है जापान के पहले ही आ जाए। जो बच्चा तमिलनाडु के कोई गांव में पढ़ रहा होगा, उसको जो एक्सेस है इंटरनेट की वजह से, एजुकेशन का, नेटवर्किंग का, कोलैबोरेशंस का, इन्वेस्टमेंट्स का, एल्यूमिनीज का, वो न्यूयॉर्क वाले को भी वही प्रिविलेज है, जापान वालों को भी वही प्रिविलेज है, यूरोप वालों को भी वही प्रिविलेज है। सो एवरीवन इज ऑन द सेम टर्फ। अब आपके पास एक्सक्यूज नहीं है कि भैया मेरे पास ऐसा हो गया, मेरे पापा ने वो कर दिया, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। एम आई राइट? अब आपके पास बहाने, आप जैसे हो, आप लड़के हो, लड़की हो, काले हो, पीले हो, हरे हो, गोरे हो, चिट्टे हो, जैसे भी हो, आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, अपनी आइडेंटिटी बना सकते हो। एंड आई एम नॉट हियर टू टेल यू टू गो इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। भाई टीचर अगर बनना है तो टीचर बनो, पर ऐसे टीचर बनो कि पूरा बंगाल आपकी जय जयकार, रविंद्रनाथ टैगोर बनो फिर। एम आई राइट? डिग्निटी ऑफ लेबर की बात सयन कर रहा था, वही तो मैं कह रहा हूं। जरूरी थोड़ी कि आप सब बिजनेस करो, पर आप जो कर रहे हो आपसे अच्छा कोई नहीं करना। अगर आप फोटोग्राफर हो तो आप सबसे अच्छे फोटोग्राफर होने चाहिए। अगर आप वीडियोग्राफी कर रहे हो ना, तो इस कैलकाटा में, इस एरिया में आपका नाम बेस्ट होना चाहिए। अगर आप प्रोफेसर हो, टीचर हो, तो आपके बच्चे इंप्रेस होना चाहिए, समझने चाहिए कि प्रोफेसर मेरे प्रोफेसर है। आपको अपने दिन, हर वीक, हर महीने अपडेट होना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां, नोकिया, सैमसंग, कोडक जैसी, आज क्यों पूछता नहीं है उनको, ये आज MBA चाय वाला है। अगर प्रॉपर काम नहीं किया, इंटेलिजेंस नहीं बढ़ाया, वैल्यू एडिशन नहीं है, तो कल को कोई और इंजीनियर चाय वाला आ जाएगा यहाँ पे होकर लेक्चर देगा और आप उसके लिए भी तालियां बजाओगे। Life is all about emerging. Life is all about growing. Life is all about learning. Life is all about creating values. Life is all about doing something more than before. Am I right? तुम्हारे घर का टीवी बदल गया। Am I right? तुम्हारे घर की मशीनें बदल गई, तुम्हारा फोन बदल गया, तुम्हारा ड्रेस कोड बदल गया, तुम्हारे जूते बदल गए, तुम्हारी हेयर स्टाइल बदल गई, तुम्हारी चश्मे की फ्रेम बदल गई। क्या तुम बदले हो कि वही हो जो 5 साल पहले थे? कुछ है काम? बताइए। थैंक यू वेरी मच। मैं जिस काम की वजह से आया हूं तो वो करूंगा ना पहले। एम आई राइट? भाई मैं आपके बीच हूं ना, क्योंकि फ्लो टूट जाएगा और आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। देखो क्या है ना, ये चकाचौंध से किसी की इंप्रेस मत होना किसी के, क्या, क्योंकि सोशल मीडिया पे दुनिया में कोई अपनी फेल्यूर्स नहीं बताता है। ठीक है, हमारे भी आपने वो बोल दिया 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 करोड़ का टर्नओवर, पर वो प्रॉफिट नहीं होता है। एम आई राइट? बस वी आर क्रिएटिंग अ इम्पैक्ट, एन इम्पैक्ट। या अंग्रेजी में फर्क नहीं पड़ता, आप गरीब बोलो सही बोलो, धंधा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। आपको तो छोटी सी जर्नी हमने चालू करी चाय के ठेले से, मैं अकेला ही था। हमारे देश में होता क्या, हम बड़ा बड़ा बहुत सोचते, बहुत बड़ा सोचते। मेरे को हेलीकॉप्टर खरीदना है, न्यूयॉर्क जाना है, मेरे को आईफोन खरीदना है, बड़ा सबको सोचना है, करना किसी को नहीं है। आपके सपने ये है, एम आई राइट? ये पंखा जो है ना आपका सपना, ये डिस्टेंस बता रहा हूं। आपकी एफर्ट्स ये है, आपकी एफर्ट्स ये है, आपके सपने, आपके लक्ष्य ये है, राइट? और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो दुख है, मजा नहीं आ रहा, डिप्रेशन है, बुरा लग रहा है,
भैया वो तो मेरे को परेशान कर रहा है, आजकल मेरे को रात को नींद नहीं आती है, मेरे को खाना हजम नहीं होता है। या तो ये ड्रीम्स को छोटा कर दो या एफर्ट्स को, एक ही चीज हो सकती है बस। ड्रीम्स छोटी कर दो, सपने, आकांक्षाएं, इच्छाएं, उम्मीदें पालना छोटी कर दो, या फिर अपनी एफर्ट्स को बढ़ा लो, दुख कम हो जाएगा। बड़ा इजी सा है भाई। आदमी को दुख कब आता है, डिप्रेशन कब आता है, मजा कब नहीं आता है? जब उसकी इच्छा की काम चीजें नहीं हुए। मैं राइट? आपने जिस लड़की को इंस्टाग्राम पे डीएम करा, उसने अगर नहीं देखा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, सीधी बात है। उसने रिप्लाई कर दी, चलो मैं कहानी बताता हूं, दुख की कहानी। आपने इंस्टाग्राम डाला, उसने देख लिया, आपको लगा साला देख लिया, रिप्लाई नहीं करेगी। उसने देख लिया, उसने लाइक कर दिया, आप खुश। उसके बाद आप फिर, अरे अब रिप्लाई तो करेगी, लाइक कर दिया मेरा उसका, फिर वो रिप्लाई करती है, हाय का हाय, फिर तुम्हारे पारा ऊपर होता है, फिर वो तुम हाँ वारू करोगे, वो फिर वो 6 घंटे बाद देखेगी, फिर 8 घंटे बाद लाइक करेगी, फिर 14 घंटे के बाद मैं आई एम फाइन, फिर 6 घंटे लेगी, फिर बोलेगी हाउ आर यू नाउ। अब आपने इधर 1 दिन बिगाड़ा, उसने 1 मिनट बिगाड़ा। मैं राइट और रॉन्ग? आप टीवी बन गए, रिमोट कंट्रोल आपका उस लड़की के हाथ में या लड़के के हाथ में। मैंने आपका डीएम का रिप्लाई कर दिया, चल खुश हो जा। अरे खुश, मेरे को लड़की का रिप्लाई आ गया। वो आपको 6-6 घंटे में बदल रही है, वो 6-6 घंटे में आपको बदल रहा है। आप टीवी बन गए, रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में। ऐसी लाइफ नहीं जीना बस। तू जा, नहीं करना हमको सेटिंग, नहीं हमको गर्लफ्रेंड बनाना, नहीं हमको बॉयफ्रेंड बनाना, हमको बिजनेस करना है, हमारे सपने पूरे करने। क्योंकि जो माँ बाप ने तुम्हारे पैसे इकट्ठा करके इस कॉलेज में फीस दी होगी ना, वो इंस्टाग्राम के रिप्लाई से तो भरपूर नहीं हो पाएगी बस। आप समझने की कोशिश करो, ये बहुत बेसिक चीज है। मैं बात बड़ी बड़ी नहीं करूंगा कि कठोर हो जाओ, 14 घंटे काम करो, पैसा लगाओ, मेहनत करो, नहीं। छोटी छोटी चीजें बदलनी है, अपने आप चीजें लाइन पे। जिंदगी में एक चीज याद रखना, अगर ये नहीं पता नहीं कि क्या करना है, तो एटलीस्ट ये पता कर लो कि क्या नहीं। जो नहीं करना है वो हट जाएगा ना, तो अपने आप किसी दिन एक ऐसा रात को विचार आएगा जो आपको बता देगा कि कल सुबह उठ के। हमारे सामने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन ने डरा के रखा हमको जिंदगी भर, डरा के रखा। किसी जैन अंकल, अग्रवाल अंकल, बिल्लौरे अंकल, शर्मा अंकल, दुबे अंकल, किसी से भी पूछते धंधे का जिसने ऑलरेडी स्टेब्लिश कर दिया है, वो डरा देता था। सर मैं पूछता था बिजनेस करना, अरे बिजनेस मत करना, फट जाएगी, अरे जीएसटी लगेगा, अरे वो देख लो शर्मा जी वो भी फेल हो गए, वो गुप्ता जी ने हमारी सैलरी नहीं दी। ये सब डरा देते थे। वो इसलिए नहीं डरा देते कि धंधे में इतनी प्रॉब्लम्स है, वो इसलिए डरा देते थे कि कल को मेरे सामने आके मेरा कंपटीशन खड़ा पड़ी। एमबीए चाय वाला खड़ा है, मैं लिख के बोल रहा हूं, अगर आप पहला धंधा चालू करोगे ना, मैं पहले आपका कस्टमर बनूंगा। आप कल की तारीख में अगर धंधा चालू करते हो तो मैं आपका पहला कस्टमर। मैं आपको फिर से लिख के दे रहा हूं, आज से एक एक्सरसाइज आपको करनी है। अगर आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका पहचान वाला किसी ने कुछ भी चालू किया, भले वो टीचर बना हो, पानी का बोतल का धंधा चालू किया हो, टी शर्ट का चालू किया, व्हाट द फक चालू किया, जो भी चालू किया, चाय का चालू किया है, बी द फर्स्ट कस्टमर ऑफ दैट पर्सन। और पेमेंट वाला, फ्री वाला नहीं, पैसे देके उसका इंस्टाग्राम पे फोटो डालो, फेसबुक पे फोटो डालो। दे नीड यू। तालियां जिसके लिए बजती है ना, दूसरों के लिए बजाना पड़ती, फिर जाके आप नहीं दो, आपके लिए भी बजेगी तालियां। गिव एंड टेक का सिंपल रूल है, वो भगवान भी हिसाब करता है ऊपर। वो भगवान हिसाब करता है कि कितना दिया है और कितना किया है इस आदमी ने, जब जाके वो रिटर्न देता है। रिटर्न ऐसे नहीं मिलता है। 100 रुपए कोई देना तो 1000 रुपए का काम करना, कितना? 100 रुपए कोई मजदूरी देना, कुछ भी दे, सर्विस के लिए दे, 1000 का काम करना, नहीं तो 5000 का काम करके जाना। वो बाकी के 4900 रुपए का हिसाब वो भगवान कर रहा है। वो 12% रिटर्न नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ रिटर्न देता है 3-4 साल के बाद। क्या करता है? हमको तो 100 रुपए मिलते हैं, हम 10 का ही काम, अरे मेरे को मजा नहीं आ रहा यार। Am I right? It shouldn't be like this way, boss. You should give your 1000%, 100% वाले तो बहुत हो गए आप, क्योंकि ये भी 100% दे रहा है, ये भी दे रहा है, तुम तो सब 100% वाले तो बराबर हो गए ना। अलग कैसे दिखोगे? दुनिया पहचानेगी। अरे एमबीए चावला पे लोग हंसते ही थे ना, मजाक उड़ाते थे ना। आज 100 आउटलेट्स हो गए, इंटरनेशनल जा रहे, सीधी बात है। 4 दूसरे धंधे, रियल एस्टेट, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ग्रो कर ही रहे ना। लोगों की थोड़ी सुनेंगे, हम हमारा काम कर रहे हैं,
मुझे बोला गया एनआईटी में आना लेक्चर देना, दे रहा हूँ ना मैं अपना 1000% दे रहा हूँ ना। एम आई राइट? कोई 4 लोग तो इंप्रेस होंगे, एक आधा फ्रेंचाइजी कन्वर्ट हो सकता है, नहीं तो 25-50 लोग मेरी चाय की दुकान पे तो जाएंगे। दिस इज द रिटर्न। और बाकी जो मेरा 1.5-2 लाख रुपए लूंगा मैं कॉलेज में आने का, वो तो मेरे को इनवॉइस हो गया, मेरा रेस, फ्लाइट्स की टिकट भी आ गई है। मेरा सेट है, तुम्हारा क्या? राइट? छोटे छोटे चेंजेस करना है बॉस। और बहुत सारी कहानियां हैं, मेरे को कहानियों से बहुत इंटरेस्ट होता है। ये जब आप संघर्ष करते हो, घर से बाहर निकलते हो, आपको नींद पूरी नहीं होती है, आपके पास कपड़े अच्छे नहीं होते, कपड़ों में दाग होते हैं, बाल नहीं कटते, दाढ़ी ऐसी होती है, ये किसी और के लिए नहीं कर रहे हो आप, आपके जीवन सुधारने के लिए कर रहे हो ना। तो किसको दुखों की कहानी बताते हो अपने? कोई तुम्हारा वो दुखड़ियाड़ा रांडी रोना नहीं सुनेगा बस, कोई नहीं इंटरेस्टेड है। Nobody will listen your talks, nobody will listen your negative feedbacks। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को नींद नहीं आ रही, मेरा माथा दुख रहा है, ये कोई इंटरेस्टेड नहीं है तुम्हारी कहानी सुनने में। Am I right? ये तुम्हारे तक ही रखो। जितना ज्यादा दुख शेयर करोगे ना, उतना ज्यादा दुख तुम्हारे माथे आएगा। जिसने दुख झेलना झेल लिया ना, उसकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। इधर कांटा भरा गया और मेरे को कांटा लग गया यार, मैं 4 दिन छुट्टी पे जाऊंगा। अरे भाई, अगर तू सक्सेसफुल होना चाहता है तो बीमार भी नहीं हो सकता, क्योंकि बीमार होने का भी टाइम नहीं है तेरे पास। Am I right? If you really want to be successful, 10-15 करोड़ की, 50 करोड़ की, 100 करोड़ की कंपनी बनानी, आप बीमार भी नहीं हो सकते, क्योंकि बीमार होने में भी टाइम नहीं है आपके पास। बीमार हो, बुखार है, डेंगू है, फिर भी काम करना पड़ेगा। जिंदगी ऐसे ही बनती है, ऐसी आसानी से नहीं। अगर मिल जाता तो सब यहाँ पे सब हो जाता। आपके भी सपने हैं ना आईफोन खरीदने के, आपके भी कार लाने के सपने हैं ना? नहीं है? किसके नहीं? बताओ मुझे हाथ खड़ा करके। नहीं लाना है कार, नहीं लाना है आईफोन, नहीं ट्रेवल करना है यूरोप यूके नहीं जाना है, पूरा भारत नहीं घूमना है, मनपसंद लड़की से शादी नहीं करनी, मनपसंद डेस्टिनेशन पे, मनपसंद मालदीव्स में उसके साथ हनीमून नहीं मनाना। किसको नहीं मनाना बताओ? सबको मनाना है, पर आपकी आलसी, आपकी जो दूसरी प्रायोरिटी ना, उसके ऊपर पर्दा आ जाता है। चाहते हम सबकी होती है, अरे इसके जैसा बनना है मेरे को, ये कार खरीदनी है, इस होटल में खाना खाना है, उस होटल में चेक इन करना है। एम आई राइट? पर हम हमारे आलसीपन, हमारे निकम्मेपन, हमारे ठिठोली टाइम पास के चक्कर में उन सपनों के ऊपर पर्दा डाल देते हैं। और बॉस, फियर इज टेम्परेरी, रिग्रेट इज फॉर एवर। जब मरते समय अस्पताल में बैठा रहोगे ना, तो ये याद नहीं रहेगा कि क्या क्या किया, ये याद रहेगा कि क्या नहीं किया। सच बोल रहा हूँ। अगर किसी लड़की को प्रपोज करना है तो आज ही कर देना, वो रिप्लाई देना ही नहीं, मैंने कर दिया मेरी तरफ से। कोई लड़के को इंप्रेस करना है, डाल दो मैसेज आई लव यू, वो रिप्लाई करे नहीं करे, मैंने मेरी तरफ से तो बोल दिया ना यार। आपका काम क्या था? बोलना, बोल दिया। धंधा चालू करने का काम किसका है? आपका। बिजनेस चालू करने का, कर दो। चले ना चले आपके हाथ में थोड़ी है, मेहनत करो। हम तो पहले रिजल्ट की बात करते फिर जाके काम करते हैं। अरे पागल, ऐसा कौन करता है? निकम्मे लोग करते हैं, अनसक्सेसफुल लोग करते हैं, पहले रिजल्ट की सोचते हैं। जिस दिन तुमने बिना मंजिल के सोचे हुए काम करना सिर झुका के चालू कर दिया ना, तुम्हारी तरक्की कोई नहीं रोक सकता बस। वो मेरे को इज्जत देगा तो मैं उसके पास जाऊंगा, वो मुझसे हाथ मिलाएगा तो मैं उससे हाथ मिलाऊंगा, वो मेरे को फेसबुक पे फॉलो करेगा तो मैं उसको फॉलो करूंगा, वो इंस्टाग्राम पे मेरे को टैग करेगा, स्टोरी पे रिपोस्ट करेगा तो मैं उसको फॉलो करूंगा। अरे क्यों? बी द फर्स्ट वन टू बी द गिवर, बी द गिवर। आगे करके हाथ मिलाओ, आगे करके सेल्फी ले लो, आगे करके उनसे गले मिला लो। उनको मदद चाहिए, आप मदद कर दो। वो पानी मांग रहे, नहीं मांग रहे, उसके पहले पानी दे दो। नहीं फॉलो कर रहे तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर दो, कमेंट कर दो, प्यार दे दो, इज्जत दे दो, मोहब्बत दे दो। और क्या चाहिए? 3-4 साल देना सीखो अपने आप। भगवान हिसाब के साथ जो रिटर्न देगा ना आपको, आपका अकाउंट में पैसे रखने की जगह नहीं होगी। ये किसी ने समझाया नहीं ना हमको। मैं क्या करूं, वो मेरे से बात नहीं करता, मेरे को क्या मिलता है उसके यहाँ जाने से? ये कॉलेज कृतांज इवेंट में मैं क्यों करूं? वो तो सब निधि है, उसका ही नाम होता है, मेरे को तो इज्जत नहीं मिलती है। वो प्रोफेसर की पकली है। ये यहाँ के हीरो बनना चाहते हो कि रियल लाइफ के हीरो बनना चाहते हो तुम? हैं? क्लास के मॉनिटर को मैंने देखा है, आज वो कहीं नौकरी कर रहे हैं। वो उस टाइम पे बहुत हीरो बनते थे। अरे छोटी छोटी 1-1 रुपए की पार्ले जी, इक्लेयर चॉकलेट, आम पन्ना चॉकलेट छोड़ोगे ना, जब जाके कल की फरोर और रोसर कमाने की औकात आएगी। समझ आई? छोटी छोटी लड़ाई लड़ो मत। हाँ तू लड़ ले, तू प्रेसिडेंट बन जा। हाँ
विधायक बन जा, तू मुख्यमंत्री, हम तो प्रधानमंत्री बनेंगे, हम राष्ट्रपति बनेंगे, हम तो यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट बनेंगे। सपने इतने बड़े रखो ना, छोटी मोटी बातों के सामने काम ही ना हो। हैं? मैं सोच रहा हूँ मैं इस बार मेरे ग्रुप का हेड बन जाऊँ। हाँ बन जा, मेरे को इंटरेस्ट नहीं छोटी मोटी लड़ाई में। बड़ा आदमी बनना है ना तो बड़े दुख आएंगे और बड़े सुख आएंगे। रेडी हो? हैं? बड़ा आदमी बनना है तो बड़ी लड़ाई करेंगे, छोटी मोटी लड़ाई तो देखेंगे ही नहीं। एम आई राइट? इकलियर राम पन्ना, 1 रुपए की इकलियर कौन सी मिलती है? 1 रुपए की लाल पार्ले जी और ये सब छोड़ दो भाई। मेरे को परसों की स्नीकर चाहिए 100 रुपए वाली, उसमें इंटरेस्टेड हूं मैं, आज नहीं। होल्ड द विजन, ट्रस्ट द प्रोसेस। और शेर बनना सीखो, शेर। कि भले 4 दिन भूखा रहूंगा पर हिरन का शिकार करूंगा। कुत्ता नहीं बनूंगा कि पॉटी भी खा लिया, बिस्किट भी खा लिए, घास भी खा ली, रोटी भी खा ली, चॉकलेट भी खा ली। है मैं राइट? हम क्या करते हैं? अरे ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो। नहीं, शेर बैठा रहता है साला 4 दिन बैठा रहेगा। अंधे हिरन को, वो हिरन खुद आएगी, शेर भी नहीं जाएगा। है मैं राइट? जाएगा ना शेर, वहीं जाएगा ना, बैठेगा ना, एक दबोचा मारेगा, 200 मीटर का पकड़ के लाएगा, अगले 4 दिन खाना की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं राइट? एक फ्रेंचाइजी का कॉस्ट 25 लाख है MBA चाइवाला की। कितना? चाय बेच के कभी नहीं कमा पाता था, पर उस टाइम 100% दिया। 30 रुपए की चाय में मैंने 30,000 रुपए की वैल्यू दी लोगों को। उसका रिटर्न आज मिल रहा है 5 साल। आपकी लाइफ के 80% रिजल्ट आपको लाइफ के 20% टाइम में मिलते हैं, एफर्ट्स के 20 टाइम में मिलते हैं। 80-20 का आपने रेशो पढ़ा होगा। एम आई राइट? जब आप 80% मेहनत करते हो तो 20% रिजल्ट मिलता है। फिर आप रेस्ट ऑफ द 20% की मेहनत करते हो तो रेस्ट ऑफ द 80% रिजल्ट मिल जाते हैं। चाइनीज बम्बू की कहानी सुनी होगी ना आपने? 4 साल तक वो चाइनीज बम्बू नीचे रहता है पेड़ के। कहाँ रहता है? मतलब जमीन के नीचे रहता है, वो नीचे ही ग्रो करता है। पर अगले 4 महीने में सर वो 80 फीट बढ़ जाता है। कितना? तो क्या 4 साल जो वो उगाई हुई वो गलत थी क्या उसकी? नहीं, वो अपना बेस बना रहा था। क्या बना रहा था? अपने कंफ्यूजन क्लियर कर रहा था, समझ रहा था जिंदगी चलती कैसे, बिजनेस कैसे होता है, लाइफ कैसे चलती, सोसाइटी कैसे चलती, देश कैसे चलता है, सब परिवार को कन्विंस कैसे करना है, फाइनेंस मैनेजमेंट क्या होता है, सेल्स क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑपरेशंस क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ये सब समझ रहा था वो। ऐसे ही बिजनेस भी चालू होता है भाई? राइट और रॉन्ग? सर के ऊपर से तो नहीं जा रही है। बड़े सीधे सीधे फंडामेंटल्स है लाइफ के और बिजनेस के। और एक बार आपने एंटरप्रेन्योरशिप ली ना, आप बहुत अच्छे इंसान भी बच जाते हो। और लंबी रेस का अगर घोड़ा बनना है तो नियति और सिद्धांत साफ रखना जीवन में। क्या करना? नियति, नियम और सिद्धांत, इनसे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। क्योंकि वो नहीं होते 2-3 महीने में नियत खराब हो जाती, पैसा लेना लोगों के, लूट पट्टी करना है, उसके पैसे ले लूंगा फिर नहीं खाऊंगा, इससे 1 लाख लिया, उसको दिया, इसको दिया, इसको कर, ऐसे करते? ये नहीं करना है। लंबी रेस का घोड़ा बनना है, शेर बनना है। क्या खाना है? सिर्फ हिरन। और रिजल्ट की चिंता नहीं करना है। एक वो होती है कुत्ती, वो कुत्तनी होती है, बिल्ली मतलब कुत्ती की जो वो ना फीमेल वर्जन, कुतिया होती है। एक कुतिया होती है सर, एक हथनी होती है। दोनों एक साथ प्रेग्नेंट होते हैं। हथनी एक साथ प्रेग्नेंट होती है, कुतिया एक साथ प्रेग्नेंट होती है। कुतिया हर दूसरे तीसरे महीने 10 बच्चों को जन्म दे देती है। क्या कर देती है? 5-7 बच्चे साथ में देती है कुतिया जन्म। हथनी उसकी दोस्त होती है, वो रात को मिलती, क्यों तेरा क्या हुआ, तेरा बच्चा कब होगा? कुत्ते नहीं बोलती, हाँ होगा। फिर 2 महीने होते हैं, फिर कुतिया 5 बच्चे दे देती है। फिर वो हथनी के पास जाती, बोले क्या है तेरा, दगला नहीं? ऐसे 4-5 बार चलता है तो हथनी के फिर आती, हथनी का दिमाग खराब हो जाता, बोले तू कुत्तियों के बच्चों को जन्म दे रही है, मैं हथनी हूँ, हाथी पैदा कर रही हूँ, टाइम लगेगा। जिस दिन मेरा बच्चा पैदा होगा जमीन हिल जाएगी, मेरी जमीन हिला दूंगा जब मेरा बच्चा होगा। तो इंटरेस्ट नहीं है छोटे कंकड़ों में, इतना बड़ा पत्थर पहाड़ पैदा करूंगी कि पूरा हिंदुस्तान जानेगा, पूरा जंगल जानेगा, राजा बनेंगे। जब हाथी जाता है तो सब रुक जाते हैं। है हिम्मत तुम्हारी जाने की सामने से कार निकालने की? और कितने कुत्ते भौंकते जब आप घर से निकलते हो। मैं राइट और रॉन्ग? तो जिंदगी में हाथी बनना है कि कुत्तों का बच्चा बनना है? टाइम लगे, एफर्ट्स लगे, पैसा लगे, संघर्ष लगे, पर 4 साल बाद रिजल्ट आए, पर वो लंबी रेस का घोड़ा आपको बनाएगा। क्या बनाएगा? जो जल्दी आते हैं ना बरसाती मेंढक, वो किसी काम के नहीं होते हैं। आपको मगरमच्छ बनना है, आपको हाथी बनना है, आपको शेर बनना है, आपको राजा। जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है ना। वो इंटेलिजेंट होता है, ना ज़्यादा ताकतवर होता है, ना शार्प होता है लोमड़ी जैसा, ना हाथी जैसा उसका शरीर होता है। पर क्या होता है भाई पता है? उसका माइंडसेट कि मैं शेर हूँ बॉस। एम आई लायन? मैं तो लायन हूँ। और तुम लायन हो, इसके लिए तुम पड़ोसी को मत बोलो कि तुम को लायन बोल।
तू अपने आप में सोच मैं लायन हूँ, तू पड़ोसी लायन बोले कि ना बोले, तू तो लायन। वो सर्टिफिकेट लेता होगा क्या लोमड़ी से कि मेरे को लायन बोल? तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि तुम मेरे को MBA चाय वाला बोलो, देश का सबसे फेमस चाय वाला, ऐसा बोल दोगे क्या? है तो है, एक तो कमाना पड़ता है ना, मिलता थोड़ी है बाजार में 4 रुपए किलो में। जिंदगी है बस, रेवड़ियाँ नहीं कि चाय नहीं कि हर टपरी पे मिल जाएगी। बड़े सीधे सीधे सिद्धांत है बस। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं मेरे को यहाँ से भी, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे, भाई पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करें। एक सवाल होता था, किसी ने पूछा था इंस्टाग्राम पे मुझसे, जब पहली बार शराब पीने गए थे, लड़की को छेड़ने गए थे, लड़के को छेड़ने गए थे, जॉइंट फूकने गए थे, गोवा की ट्रिप करने गए थे, तो माँ बाप से पूछा था क्या है? तो जब अच्छा काम कर रहे हो, बिजनेस चालू कर रहे हो, अपना कुछ चालू कर रहे हो, तो माँ बाप से क्यों पूछना भाई? है एम आई राइट? हम हमारी निकम्मापन, आलसीपन हमारे माँ बाप पे फेंक देते हैं। माँ बाप मना करेंगे क्या आपको? 3 महीने मत जाओ घर, 6 महीने मत जाओ, फोन बंद कर दो, जिंदा होना बस काफी है उनके लिए। भाई आर्मी में जो जाते हैं वो तो साल साल भर में आते हैं, जो बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं वो तो 2-2 साल में आते हैं। माँ बाप उन पे भरोसा ही करते हैं ना। तो तुम अपने 6 महीने घर से बात, अरे कलकत्ता में उनका जहाँ घर है उससे दूर घर ले लो, 5-10 किलोमीटर दूर, और चालू करो अपना कुछ। प्लीज प्लीज स्टॉप मेकिंग योर पेरेंट्स ऑफ कल्प्रिट ऑफ नॉट डूइंग समथिंग। ये एक्सक्यूज बनाना छोड़ो कि मेरे माँ बाप ने करने नहीं दिया। ये सबसे बड़ा बहाना, सबसे बड़ा देशद्रोह कर रहे हो आप अपने साथ, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू ब्लेम योर पेरेंट्स। इट इज़ वेरी इजी। अपने से मनपसंद लड़की से शादी नहीं, माँ बाप ने नहीं करने दी। मनपसंद धंधा चालू नहीं है, माँ बाप ने नहीं करने दिया। एम आई राइट? गोवा की ट्रिप कैंसिल हो गई, माँ बाप ने नहीं करने दिया। हमारे पास सबसे इजी, सस्ते, साधारण, सरल लोग हैं हमारे माँ बाप, जिसका हर फेलियर का ठिकाना हम उनके ऊपर फोड़ देते हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो एक लौता रिश्ता है अनकंडीशनल लव का जो बचा है हमारे देश में, वो माँ बाप का, उसको तो मत बिगाड़ो यार। आपसे हाथ जोड़ के विनती है। आपके माँ बाप ने बड़ी मेहनत के साथ आपको पाला है, और आपकी माँ ने तो 9 महीने ज़्यादा आपको पाला है। प्लीज़ उनको अपना है ना ठीकरा मत फोड़ो यार, उनसे झूठ मत बोलो यार। और चलो माँ बाप से बोल लोगे, मुझसे बोल लोगे, देश से बोल लोगे, कॉलेज वालों से बोल लोगे, खुद को कब कब बेवकूफ़ बनाओगे? खुद को कब तक बेवकूफ़? आर्टिस्ट बनना है, आज इस इवेंट के बाद पहला आर्ट लिख देना, बना देना। बिजनेस चालू करना है, आज जाके 4 ईंटें ला देना, अपना कोई भी चालू कर देना। चाय का ठेला डाल दिया था ना मैंने, तभी MBA चाय वाला बना ना। वो ठेला नहीं डालता तो MBA चाय वाला होता। जो भी करना हो, अगर कैमरामैन बनना है तो आज एटलीस्ट 10,000 रुपये इकट्ठा कर लेना, 5,000 रुपये इकट्ठा कर लेना, किसी से किराए पे ले लेना, किसी की शादी में ऐसे ही घुस जाना कि मैं तुम्हारे यहाँ फोटोग्राफर हूँ। इतनी अच्छी फोटोग्राफ्स क्लिक करना कि अगली उसके भाई बहन की शादी हो तो तुमको बुलाए। नेवर नेवर एक्सपेक्ट अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर टैलेंट, क्योंकि परफेक्ट प्लेटफॉर्म कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। कभी आपके हिसाब से चांद तारे नहीं होंगे, कभी आपके हिसाब से मौसम नहीं होगा, कभी किसी आपके हिसाब की ऑडियंस नहीं होगी, कभी आपके हिसाब के लोग नहीं होंगे। कुछ अपने हिसाब से नहीं होता है बस। मेरे आने से पहले मैं किसी को नहीं जानता था यहाँ पे, पता है आपको? पर आप, मुझे लगता है क्या कि मेरा कोई एक भी दोस्त कम है यहाँ पे? कम से कम 100, 150, 200 लोग हैं ना मेरे दोस्त यहाँ पे। कितनी देर में बनाया मैंने? 20 मिनट में। कोई जानता था मुझे? मैं तो किसी को नहीं जानता था, आप तो शायद जानते होंगे। पर अब मेरे 200, 250, 300 दोस्त मैंने बना दिए। कितने मिनट में? 20 मिनट में। यही पूरे देश के साथ हम लोग कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ गुड नियत, गुड नियति, गुड सिद्धांत, अच्छी भाषा शैली, नियत साफ, और बस देने की चाहत। गिवर्स गेन, गिव करो, देना सीखो। ये बहुत छोटे छोटे प्रिंसिपल है लाइफ में, हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेंगे बॉस। क्योंकि कोई ना पड़ोसी आपका ठेका लेगा आपके सक्सेस का, ना मैं लूँगा, मैं तो चले जाऊँगा अभी फ्लाइट कट के बूम, ना ये लेगा सही। यानी इसके 4 रेस्टोरेंट है, 10 दूसरे खोलने, उस पर फोकस लगा लेगा। या ज्ञान देगा, आपके साथ सेल्फी लेगा, इंप्रेस करेगा, इंस्टाग्राम स्टोरी डालेगा, फिर सब अपने यूँ करके निकल जाएंगे। आई एम लिटरली टेलिंग यू गाइस, नो वन विल सपोर्ट यू एट योर फर्स्ट प्लेस एंड दे शुडंट। अगर जब तक अपनी हिस्से का संघर्ष नहीं करोगे, आप घिस घिस के शंकर नहीं बनोगे। क्या? जब तक घिसाई नहीं होगी ना, आपकी धुलाई नहीं होगी ना, जब तक आप शंकर नहीं बनोगे। घिस घिस के बनता है ना शंकर। बातें तो ऊपर से नहीं आ रही है। मैं बड़ा बैलेंसिंग रख रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि मेरे को ना बटरिंग बातें करते नहीं आती। जोश हाई वाई जस्ट नहीं है। नहीं भाई, जोश है ही नहीं तो हाई क्यों करना है? ये ऐसे खड़े रहते बच्चे, यूं हाथ, ये इधर हो ना, 2 मिनट इधर हो प्लीज, 2 मिनट आइए आप आइए। हाँ जाइए। हाथ कैसे मिलाते हैं? हाथ मिलाइए। हाय कैसे हैं आप?
मेरा भी अच्छा चल रहा है। अरे नहीं, एनर्जी चाहिए, हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए, ऐसे हाथ मिलता है, गले मिलते नहीं आता है। बट प्लीज बैठिए, थैंक यू वेरी मच। एनर्जी लाइए लाइफ में, किसी से मिलिए, बात कीजिए, 1000% दीजिए, वो इंप्रेस होना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे चलते हैं। अरे दम से चलिए, पैर तो रखिए, हिलनी चाहिए जमीन, 4 लोग देखना चाहिए। खूबसूरती मत दिखाइए, अपनी एनर्जी दिखाइए, अपना नॉलेज दिखाइए, अपना अनुभव दिखाइए दुनिया को। टेम्परी वो मत बनिए, बरसाती मेंढक, लंबी रेस का घोड़ा बनिए। एनर्जी लाइए, पढ़िए, नॉलेज लाइए, कॉन्फिडेंस लाइए। 4 लोग जब सवाल पूछे तो जवाब देते रहिए। इसी से ही आप जिंदगी में आगे। ढीले लोगों के लिए, आलसी लोगों के लिए, ये ऐसे मतलब आलसी लोग कुछ है ही नहीं। विदाउट एनर्जी नथिंग इज देयर। नोबडी विल गिव यू रिस्पेक्ट, नोबडी गिव यू धंधा। आपकी दुकान में भी कस्टमर नहीं आएंगे अगर ऐसे ढीले ढाले रहे तो। फुल फाल एनर्जी चाहिए बॉस, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार होता है। एम आई राइट? वो चमत्कार आपके अंदर होना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें करी, बाकी आप सब लोगों ने मेरी शायद हज़ारों सैकड़ों वीडियोस देखे होंगे, आप ऑलरेडी मुझे पसंद करते हैं। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, 100 आउटलेट्स क्रॉस कर दिए। आपके कैलकाटा में भी 4-5 आउटलेट ऑलरेडी है, 5 और आ रहे हैं। लेक टाउन में आप जाइए, भवानीपुर में आप जाइए, बड़ा बाज़ार में आप जाइए, और अब एक नया आउटलेट चालू किया सॉल्ट लेक में। तो सिर्फ कैलकाटा में हमारे 5 आउटलेट, तो अक्रॉस इंडिया 100 है, और एटलीस्ट 100 और आ रहे हैं अगले 1 साल के अंदर। और इस साल से हम इंटरनेशनल भी एक्सपांड कर रहे हैं। ये छोटा सा काम। उसके बाद हमारा MBA चावला अकेडमी है, आई रन अ टेक्नोलॉजी कंपनी, वी आर इनटू रियल एस्टेट एज वेल, एंड सो मेनी थिंग्स। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल। आप आज देखते होंगे कि सिर्फ चाय से इतना कुछ कैसे कर लिया, तो सिर्फ चाय से नहीं होता है। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे 100 लोगों का घर है, 100 लोग हैं हमारी कंपनी में जो काम करते हैं। मेरा छोटा भाई विवेक है, हिमांशु है जो हमारे बिजनेस हेड है, CEO है। आई ट्रेवल अ लॉट, आई नेटवर्क विद पीपल, ट्राई टू फाइंड योर कोलैबोरेशन। आपका पार्टनर ढूंढना चालू करो, को फाउंडर चालू करो। इस कॉलेज में हो तो दोस्ती यारी से ज़्यादा कोई कोलैबोरेशन वाला फ्रेंड ढूंढो जो आपको को फाउंडर बन सके, जो आपका इन्वेस्टर बन सके, जो आपका शायद पहला एम्प्लॉय बन सके आपकी कंपनी का, या आपका कस्टमर बन सके। ये छोटे छोटे चेंजेस आपको करने हैं। लाइफ इज सो ब्यूटिफुल गाइस, कंडीशंस अप्लाई। ठीक है? So thank you very much to all, and it's amazing to be with you guys. Thank you very much for hosting me. Thank you. Thank you.